Hello friends, welcome back to my channel. Today we'll discuss Mulk Raj Anand, one of the greatest figure of English literature, NET, SHET, TGT, PGT. It is the common question that one question will come about Mulk Raj Anand. So you have to study briefly from first to end. Okay. So ଆମର ଯାହାକି OAVS syllabus ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ତାର syllabus କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଇଟରକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ସୋ ତୁମ କାମ ହେଉଛି ଡେଲି ୱାଚ୍ କର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କର ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ନଲେଜଟା। ଓକେ, ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ର ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ରାଇଟିଂ ଏବିଲିଟି ଅଛି, ଦେନ୍ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି ତୁମର ଏତିକି ଗୁଡ଼େ। ଯାହା ତୁମ ଲିଟରେଚର ପାର୍ଟ ଅଛି ସେକ୍ସପିୟର ୱାର୍କର ମୁଁ MCQ ଅଲରେଡ଼ି ସାରିଛି। ଓକେ, ଯାହାକି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯାହା ରହିଲା ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ, ସେଲି, କିଟ୍, କଲେରିଜ୍, ବେରନ୍ आर किसी कंप्लीट होती। देन अमेरिकन लिटरेचर जहाँकि इंडियन लिटरेचर आज आम देखा मुल्क राज आनंद। ओके, तो युड़ाक जहाँ जहाँ अच्छे मुझे गोटे गोटे कंप्लीट करी जहाँ तुम कमेंट वाइज तुम जोटा कमेंट कर मुझे नेक्स्ट वीडियोटा अपलोड करी। ओके, तापर जी इंग्लिश लिटरेचर सरला टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आई विल कंप्लीट। ओके, सो वी विल स्टार्ट बाय MCQ. Okay, do stay till the end and do like, share and subscribe my channel. Okay, what is the first question here? When was Mulk Raj Anand born? So when he was born, when he was tried, it is a common question that the examiner will ask number of times. Okay, so he was born 1905. What is the answer here? 1905. And when he was tried, please remember the date of death, that is 20th September 2024. Okay, birth and death. Okay, next is how many books did Mulk Raj Anand publish before 1935? So before 1935, he published four work. Okay, so C is the right answer. Next question: when was Mulk Raj Anand novel Untouchable published? As you know that Untouchable and Coolie is the most famous work by Mulk Raj Anand. So don't skip this story. Please at least watch the summary. Okay, so you will get at least one question about them. Okay, so when it was published, it is published 1935. Okay, next question. He is a novelist, short story writer, and art critic. He calls himself a bogus professor. He translates the native idioms and proverbs into English in order to impart the typical local flavor to English. Identify him. देखो तमे फास्ट जानिबो कि राइटर एठी तो आमे मुल्कराज आनंद विषय कहूचे माने सेटा ही हबो आंसर। ओके, बट जेतेबेले कि एग्जामिनर पचारिबो से टाइम रे तुमको उल्टे की भी क्वेश्चन दिया हेतिबो कोटेशनटा कहाँ दिखाई। ओके, तो से गोटे सर्ट स्टोरी राइटर भी थिले, आर्ट क्रिटिक भी थिले, से निजको कौन कहते बोगस प्रोफेसर बोली कहते। ए वर्डटा मन रखिबो। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस नोवेलिस्ट वाज मच इन्फ्लुएंस बाय द थ्री इवेंट। से नोवेलिस्ट तीनटा इवेंट है जोटा कि मच इन्फ्लुएंस है, जोटा कि डेथ ऑफ हिज कजिन, कजिन को डेथ थिला, क्लासमेट ऑफ कौशल्या एंड सुइसाइड ऑफ हिज आंट देवकी। ओके, आंटी को सुइसाइड and his own arrest of Canning by the police by breaking law during the Jallianwala Bagh massacre. Please remember this event, that is Jallianwala Bagh. तो ये ऊपर किए लिखिंट माने आमर मुल्कराज आनंद लिखिंट। ओके, तो ये जो नोवेलिस्ट बहुत एसोसिएटेड थे किए जालियानवाला बाग हत्याकांड उपर। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन: all these heroes as other men and women who had emerged in my novels and the short stories were dear to me because they are reflection to real people I have known during my childhood and the youth. And who said this and which work? So this is the line of Anand's preface to Two Birds and Two Leaves and the Wood. ओके, तो ये सुंदर लाइनटा कौन आसची पचार जोटा कि तुम आनंद प्रिफेस टू टू लीव्स एंड ए वुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: आनंद वाज अवार्डेड सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन एसे। ताको गोटे सिल्वर वेडिंग फंड मिलता स्कॉलरशिप कौन मिलता डेविड होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: so he met a girl, fell in love with her and got inspiration for writing reminiscences modeled on Rousseau Confessions. This work entitled The Seven Ages of Men. से गोटे झील को लव करते मैरेज भी करते, इंस्पिरेशन भी पाई आउ
ତାକୁ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ସେ ୱାର୍କର ନାଁ ଦେଲେ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ସେଭେନ୍ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍। ଓକେ, ତ ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନି। ଓକେ, ପ୍ଲିଜ୍ ରିମେମ୍ବର ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଫ୍ୟାନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, बी ए फ्रेंच पोएट फैसिनेटेड आनंद मच हु इज ही। तो बी ए जे कि गोटे फ्रेंच पोएट जे कि बहुत फैसिनेटेड हो जाते मुल्कराज आनंद राइटिंग को, हु इज दैट पर्सन? ऑथर रिम्बाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वर्क ऑफ आनंद रिफ्यूज द condemns the uselessness of a British pattern of education in India। तो ब्रिटिशर माने केमिति इंडिया रे एजुकेशन को चलाउछंती ताकू नेकी गोटे वर्क लिखिथिले। से वर्क रो नाम कोन थिला? ए लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओके, एमए। ओके, नेक्स्ट इज, about which book does Anand say it rushed out of me in 1 month? गोटे मास लागिथिला से जो वर्क पाई, तो सेडा को बुक रे अछि? द प्राइवेट लाइफ ऑफ ए इंडियन प्रिंस। दिस इज द वर्क दैट rushed out of Anand in 1 month। Okay, next question, in the novel Untouchable, Baka's sister is, there are three characters who is measure of this work. Okay, what is the name of his sister? That is Baka's sister, that is Sohini। Okay, Sohini, Baka होचंती main character। Okay, कोथिरा Untouchable। Okay, next question, which is what is the name of the Rakha sister in Anand's a novel writing by Mulk Raj Anand entitled Who is Morally Landlord of the Barber Trade Union। तो बाखार सिस्टर किए थिला? ओके, तो ओके, हु इज बरिले लैंडलॉर्ड, सेथिरो लैंडलॉर्ड किए थिला बोली पचारछि, जोड़ा कि विजय चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अनटचेबल हु वाज द जमीदार ऑफ ऑल स्वीपर्स। तो समस्तंकर जमीदार किए थिला सब स्वीपर, दैट इज लखा। ओके, मुनु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मिस्टर आनंद नोवेल। मुनु को कैरेक्टर रे मेन कैरेक्टर, दैट इज अनटचेबल। ओके, untouchable main character होची मोनू। Okay, another thing just remember for the chronology, that is Untouchable, that is published 1935, and 1936 that is Coolie, and the birds, the two leaves and the bull 1937, and the village 1939। Okay, please remember at least this work, you will get one question। Okay, next question, this novel describes a day of life of a sweeper boy, Bakha of 18। this novel is Bakha asla mane janibo ki seda hochi tomara untouchable। Okay, untouchable Bakha, please remember this character। Next, who tried to molest Sohini, sister of Bakha, in the novel Untouchable। सोहिनी को किए मॉडलेस्ट करिवे बोली कि कहूतिला, जोटा कि हमर बाखा इन द नॉवेल अनटचेबल, हु ट्राइड, दैट इज राखा। ओके, so this question, this 18 number question is for you। please do search and do comment this question। okay, 18 number question तुम पाई तुम माने सर्च करो आउ एटा कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरो ऑफ कुली इज, कुली रो हीरो किए थिला? मुनु। ओके, मुनु इज द कुलीज हीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is who is the owner of the pickle factory of Daulatpur in the novel Coolie। दौलतपुर रो जोड़ा कि पिकल फैक्ट्री रो ओनर किए थिला? जोड़ा कि सेठ बाबा डायल। ओके, व्हाट इज द आंसर? सेठ बाबा डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज गांधी यंग इंडिया द फेमस मैगजीन दैट बिकम्स द इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग। तो गांधीजी गोटे मैगजीन थिला जार ना होची यंग इंडिया, जो कि इंस्पिरेशन पाइथिले से तो को वर्क सेटा थिला तो कौन? अनटचेबल। ओके, दैट इज द अनटचेबल। अनटचेबल बहुत गुड़ाई जिनस लिखाई गांधीजी इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a French poet fascinated Anand much, who is that? Already this is the repeated question। Okay, so what is the answer? Please comment on my comment box about 22 number। Next, they think they were made dirt because we clean their dirt। This line is appears in, तो ए लाइन कोथिरे appear अछि? द अनटचेबल। ओके, जोथिरे भी डार्ट आसीबो, बाखा आसीबो। ओके, जेति कि तमर स्वीपर विषय आसीला सब गुडा तमर अनटचेबल उपरे अछि। Okay, next question, this one is a 24 number question। So the outpost colony was a group of mud walled houses that clusters together of two rows under the shadow both of the town and the cantonment, but outside their boundaries and separate from them। So what is the beginning? This beautiful line is the beginning line of Untouchable।
Okay, so both good question untouchable to ask, please do read the summary. Okay, the outcast ro first eta hochi first line of untouchable. Next question, the cobbler and the machine, the dog's life. Cobbler and machine जोटा कि गोटे dog's life ऊपर अच्छी, the parrot in the cat's duty, the gold mace and the liar, and the barber trade union. The pair of mysterious, the lost child are the name days by the Mulkraj. ए सब गुड़ाक वर्क गोटे तांकर कौन थिला, ए सब थिला तांकर गोटे गोटे शॉर्ट स्टोरी. ओके, दैट द लॉस्ट चाइल्ड, द ट्रेड यूनियन, पेयर ऑफ स्टार्स, ए सब गुड़ाक छोट छोट तांकर शॉर्ट स्टोरी थिला. Next question. A Kashmir Ideals and a pair of mustaches give the two glimpses of a poor society. ए दुईटा थिला तांकर गोटे पुअर सोसाइटी ऊपर केमती रिफ्लेक्ट करिवा ता ऊपर से लिखिथिले. देखो एडा गोटे पूरा लंबा क्वेश्चन टे देइछि, but you can understand by reading this as it is as the short summary you can say. He is question ଦେଇଛି, but we can clear by looking this question. Okay, he is the main character. He claims the descent from an ancient Afghan family. तो মনে রাখবো এটা ଗୋଟେ আফগান ফ্যামিলিରୁ বিলংস করছি. The heads of this Afghan family were noblemen and the counselor of the court of great Mughals. तो ଯୋଉଥିର ହେଡ୍ ଆଫଗାନ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ ହେଡ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ନୋବେଲମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କାଉନସିଲର କୋଉଠି ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରେଟ୍ ମୋଗଲର. And he is the tiger mustache. Se ଗୋଟେ କିଏ tiger mustache. He cannot tolerate when the village shopkeepers Ramanand turns to tips of the mustache upward, and he is ready to give the household goods and even the cattle to Bania Ramanand only to see the mustache in the goat style and the appropriate Bania. This is the character of. तो से जो टेलटा जोड़ा कि से mustache तार पूरा ऊपर को टेकिकी रखिथिला. ओके, तो ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି କାହା ଉପରେ ରିଭଲ୍ଭ କରୁଛି, କେଉଁ ୱାର୍କରେ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ପଚାରୁଛି. ଓକେ, ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜମାନ ଖାନ୍ସ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ମଷ୍ଟାଚ୍. ତ ତୁମେ ଅବଭିୟସଲି ଷ୍ଟୋରିରେ ବି ମଷ୍ଟାଚ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ହି ଇଜ୍ ଦ ବାର୍ବର ବୟ ହୁ ୱେୟର୍ସ ଦ କ୍ଲୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡକ୍ଟର. ଗୋଟେ ବାର୍ବର ବୟ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲୋଥ୍ ପିନ୍ଧିଛି କେଉଁଟାର, ଡକ୍ଟରର. The villager elders, including Vijay Chand, burly landlord, do not like it. They threaten him, but the barber goes on strike and wins the end. In the end, and he organizes the barber trade union and breaks the age-old customs going to the houses. This is the character appears in barber trade union. Okay, तो गोटे character जहाँको एतिकी गुड़ाए रिभल्व करिछि, एटा कहा उपरे दिया है बोली कहाउछु. ओके, ए 20 नंबर क्वेश्चन होची तुम पई, गूगल सर्च करके भी तुम माने आंसर दे परिबो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कबलर एंड द मेसिन ए डॉग्स लाइफ. गोटे कबलर आ मेसिन गोटे वर्क कार मुल्कराज आनंद कर. ओके, गोटे डॉग्स लाइफ ऊपर अछि. The parrot in the case duty, the gold was and the liar, the barber trade union, a pair masters, the lost child, name of death by Mulk Raj Anand. ये सब गुड़ा गोटे गोटे स्टोरी तांकर. ओके, तो ये सब कौन इनक्लूड अच्छी तांकर शॉर्ट स्टोरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए काश्मीर आइडियल्स एंड द पेयर ऑफ मस्टर्स कीप द टू ग्लिम्पसेस ऑफ. ए दुईटा स्टोरी बेसिकली तार मेन थीम होची फेडुअल सोसाइटी. आमर जमी सोसाइटी कौन कौन चलती यहाँ को रिभल्व करुच्छी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अनंत एपियर्स इन. अनंत कौ स्टोरी अच्छी, द बिग हार्ट रो अच्छी से कैरेक्टरटा. एंड हु इज द मिस्ट्रीस ऑफ अनंत ऑफ द बिग हार्ट. किए से मिस्ट्रीस. ओके, तार मिस्ट्रीस होची जानकी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच टेक्निक्स यूज इन द बिग हार्ट. बिग हार्ट रे को टाइप रो टेक्निक कुआ होची. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एथरे यूज कराई, बट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा साथ एसोसिएटेड, विलियम जेम्स साथ एसोसिएटेड, जोटा कि फ्लो ऑफ थॉट. ओके, जोटार कि डिफरेंट टाइप रो थॉट गुड़ाक आमर एट ए टाइम आसे, जोटार एंडिंग नथिबो. ओके, अनकॉन्शियसली वी आर थिंकिंग अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the kind of a autobiographical novel which expresses Anand's experience in the first even year of his childhood. The novel is, तो ये जो स्टोरी गुड़ाक दिखाई आनंद एक्सपीरियंस फर्स्ट 7 years. 7 years माने मन रखिबो कि 7 summer. ओके, इज द राइट आंसर. I am a rat. This is the famous line book of Anand. I am a rat बोली कोथिरे कहितला, से द प्राइवेट लाइफ ऑन एन इंडियन प्रिंस एथिरे से कहितला I am a rat. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who narrate the story Private Life of an Indian Prince? किए एथिरो narrator? Dr. Shankar. Okay. Next question. This is the story married a village woman and Gauri. गोटे story अच्छी जी गोटे village woman जा ना होची कौन गौरी who is ill treated by her husband and mother in law जी की बहुत struggle करची suffer करची तांकर husband द्वारा आउ तांकर सासु द्वारा but she fight against it किंतु से fight कला and finally goes to the city to lead independent girl सेइथिପାଇଁ से निजे struggle करके टाउन को भी जाइए independent girl भाବରେ बंचिला तो ये जो स्टोरी कहार मेन थीम अच्छी द ओल्ड वुमेन एंड ए काउ ओके तो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टाट टेक्स्ट बाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख गुलाब एपियर्स इन गुलाब कौन अच्छी द अनटचेबल अच्छी सेमती द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहिनी इन मुल्कराज आनंद अनटचेबल तो सी किए थे कालीनाथ ओके दिस इज ऑल अबाउट 39 क्वेश्चन आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट and if you wish any kind of topic you can comment me. I will definitely provide you as soon as possible. Thank you for your support. Keep sharing and keep loving.